Figma AI will take our jobs. Really? Hey guys, this is Kashish Tripathi, a remote UI UX designer working from India. और आज मुझे आपसे बात करनी है Figma AI के बारे में. So Config 2024 में हम सब ने देखा कि क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई हैं and it's really scary. It is scary for, अगर मैं बात करूँ especially for the young designers. Why? बिकॉज अगर आप एक डिज़ाइनर हो जो लेट्स से अभी आपने अपनी डिज़ाइन जर्नी शुरू करी है, या फिर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, या फिर आपको इनफैक्ट 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, तब भी यू आर रिगार्डेड एज अ जूनियर डिज़ाइनर. इन दैट केस you really need to think about how Figma AI will change a lot of design things that you do. The biggest change that I am seeing is in the UI design phase. आपने देखा की नोट में कि कैसे एक prompt डालकर ही UI डिज़ाइंस क्रिएट हो रहे हैं, एंड दिस इज़ जस्ट स्टार्टिंग. अभी बीटा वर्जन भी लॉन्च नहीं हुआ है, धीरे धीरे सारी चीज़ें लॉन्च होंगी. एंड हाउ यू विल प्रोग्रेस फ्रॉम हेयर, हाउ यू विल डू हार्ड वर्क इन दीज upcoming 6 months or let's say 1 year at max will determine your future. मैं क्यों यंग डिज़ाइनर्स की बात कर रहा हूँ? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि जो जूनियर डिज़ाइनर्स होते हैं दे यूजली से कि हम तो सिर्फ UI डिज़ाइन करते हैं, वी डोंट डू UX. हमें UX में मज़ा ही नहीं आता है. हम एक UI डिज़ाइनर है, हमें कलर्स पसंद है, टाइपोग्राफी पसंद है, हमें ड्रिबल वाले डिज़ाइंस बनाना पसंद है. बट रियलिटी में नाउ ऑल ऑफ दोज थिंग्स कैन बी डन बाय योर मशीन इटसेल्फ. आपका Figma AI ये सारी चीज़ों पर काम कर लेगा एंड इट विल बी 100 टाइम्स बेटर देन अ जूनियर डिज़ाइनर. तो अगर आपको लगता है कि आप Figma AI से लेट्स से 100 टाइम्स बेटर हो UI डिज़ाइन में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ नॉट, देन आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू टू नेविगेट थ्रू दिस फेज. लेट्स टॉक अबाउट डिज़ाइन एजेंसीज़. बहुत सारी डिज़ाइन एजेंसीज़ ऐसा करती हैं, दे हायर फॉर जस्ट UI डिज़ाइनर्स. लेकिन अब मुझे लगता है विद Figma AI ये हायरिंग्स बंद हो जाएंगी. बंद नहीं भी होंगी तो बहुत मिनिमम हो जाएंगी, लेट्स से 1 or 2 if there was 10 or 12 hiring for that position. So how to navigate is the biggest question. But इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मुझे आपसे ये भी बात करनी है कि what I feel आगे क्या क्या होने वाला है. So अभी आपने देखा कि आप एक प्रॉम्प्ट डाल रहे हो Figma AI में और वो आपको क्रिएट करके दे रहा है यूजेबल स्क्रीन्स, और वो स्क्रीन्स ऐसी बना के दे रहा है कि आप उनको यूज़ भी कर सकते हो, राइट? अगर आपका एक स्टार्टअप है, इफ़ यू आर अ फाउंडर ऑफ अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप, आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो चीज़ों को, इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन एक्चुअली यूज़ दो स्क्रीन्स. इतनी बुरी स्क्रीन्स नहीं है, इट्स फॉलोइंग ग्रेट विजुअल हायरार्की. उसमें आपका डिज़ाइन सिस्टम भी यूज़ हो रहा है, एंड प्रॉब्ली दे ऑल्सो टच्ड अपॉन वन थिंग दैट वॉज देयर कि आप अपना डिज़ाइन सिस्टम भी इनपुट कर सकते हो Figma AI में. यू कैन ट्रेन देयर मॉडल्स टू वर्क अराउंड योर डिज़ाइन कॉम्पोनेंट्स. सो दैट इज़ अगेन अ वेरी स्केरी थिंग. So yeah, coming back to what they showed in the keynote, we all know that those screens are very much usable. Your product managers can use that, your front-end developers can use that. So there is high chances that people are not going to be paying you for doing just the prompt writing, let's say. But what they will pay you is for your critical thinking, problem solving ability and your UX skills. तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, एंड दिस इज़ दी ओनली वे यू कैन नेविगेट थ्रू दिस फेज. सो आज से ही स्टार्ट हो जाओ. अगले 6 महीने, 1 साल, यू जस्ट हैव टू डिवोट टू इम्प्रूव योर UX skills, to improve your critical thinking abilities and the capability to perform great user experience. What do I mean with problem solving or critical thinking, or let's say UX skills as well? So problem solving में वो सारी चीज़ें आएंगी कि कैसे आप एक प्रॉब्लम को टैकल करते हो. The biggest thing is to observe the issues, right? सबसे पहले आपको किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या. So finding the problems, right? Finding the right problems to solve is the biggest thing. So start from there. Try to iterate, try to brainstorm, try to come up with creative ideas, which probably Figma AI will take years to do. So that is your superpower as a human being, that you have emotional intelligence. As a human, you can think about what user wants, what are their pain points,
राइट? आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Another thing is to think critically, right? You just don't have to follow a specific route or a specific guideline. Let's say अगर हमारे पास एक guideline है कि कुछ चीज़ें ऐसे ही होती हैं, but if there is an exception, if you think that नहीं, this is not the right way, you should question things. You can ask questions from your users, from your stakeholders, a lot of people. Ask as many questions as possible and think critically. Try to come up with a lot of answers which will help you to, brainstorm really great ideas and build really nice products. And the most important thing is to learn UX, right? Now the days are gone जब आप सिर्फ UI designer, अगर आपका एक title सिर्फ UI designer का था, तो now that thing is gone. Now you have to learn UX by any means. With that, I mean you have to become a full-fledged product designer and not just a UI designer or just a UX designer. Because with Figma AI, everybody is like this on the graph, right? On UI skills, everybody will be like this. And this is your starting point to actually achieve greater advantage than a lot of different designers by learning problem solving skills, improving your UX skills, and learning how to think critically. So guys, this was what my perception about Figma AI is and how this will change a lot of things when you talk about design in general and especially the product design phase. Now, if you want to learn how you can become a kick-ass product designer in 2024, here's a video, you can check it out. Until then, it's Kashish signing off.